Hello students, the question is, when a cell is connected across external resistance 5 ohm, a current of 0.25 ampere flows through the circuit. If the external resistance is replaced by 2 ohms, a current of 0.5 ampere flows through it. The EMF of the cell in the circuit is option 1 0.75, option 2 1 volts, option 3 1.25 volts and option 4 1.5 volts. So the problem is based on the topic current electricity and in particular the some basic circuit rules, the use of some basic circuit rules. So according to the problem, there is a cell. Definitely when there is a cell, a practical cell, it is having an internal resistance. Now the cell EMF is unknown, the internal resistance is unknown. In the first situation, in the first case, it is connected across an external resistance of value 5 ohm. So this is the first case. And a current here in this first case, it flows 0.25 amperes. So this is the first case here. Now from this particular circuit we can write the equation of current, that is 0.25 is equal to the total voltage, which is E upon the total resistance, which is 5 plus small r. Or we can say that after cross multiplying, 0.25 r plus 1.25 is equal to E. Now let us call this equation as equation number 1. Now the second case. In the second case, the cell is same. Definitely the internal resistance would also be same. EMF is E, which is unknown and we have to find out. But the external resistance now changed. External resistance is changed to 2 ohms. So this value is 2 ohms. And by doing so, by changing this external resistance, the current also changes. So current becomes 0.5 amperes in this case. Now using the basic circuit rules, according to the basic circuit rule, the current 0.5 ampere is equal to the net EMF, which is E upon the net resistance, because this and this internal resistance and this 2 ohm resistance are in series. So this becomes R plus 2. Now cross multiplying this, we get this value as 0.5 R plus 1 is equal to E. Now call it as equation number 2. Now in this particular question, we have to find out the EMF, not the internal resistance. So in this way, so we can say that we have to eliminate this small r from these two equations. So to eliminate this small r, what we can do is we multiply the equation by 2 on both sides. We multiply both sides by 2 and subtract one first equation from the second equation. So after multiplying it by 2, this left hand side becomes 0.5 r plus 1.25 into 2 is 2.5. So this becomes 2.5 and 2 multiplied by E, this becomes 2E. So this is the modified first equation. Now let us call this as equation number 3. Now subtracting equation 3 from equation 2. So this point 0.5 r, it cancels. 1 minus 2.5 becomes 1 minus 1.5 and E minus 2E becomes minus E. Now we can say that this becomes, this E becomes, or the EMF becomes 1.5 volts. So the answer is 1.5 volts. EMF is 1.5 volts. So option 4 is correct here. Option number 4 is correct here. 1.5 volts. तो यहाँ एक सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम पूछी गई है, जिसमें एक सेल है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से कनेक्ट किया गया है फर्स्ट केस में. तो उस केस में 0.25 करंट एम्पियर फ्लो होती है सर्किट में. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर दिया जाए 2 ओम से, तब उस केस में करंट फ्लो होती है 0.5 एम्पियर्स इस सर्किट में. हमें बताना है ईएमएफ ऑफ द सेल. तो यहाँ सेल है तो डेफिनेटली उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी. तो एक सेल और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ शो किया है फर्स्ट केस में. करंट होगी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ क्योंकि एक सिंगल सेल ही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्मॉल ई, तो हमने ईएमएफ के लिए ई लिखा है. और रेजिस्टेंस जो है दोनों सीरीज में है, स्मॉल आर और 5 ओम सीरीज में है, तो 5 प्लस आर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 प्लस आर को, 5 इंटू 0.25 इज 1.25 हो जाएगा और r इंटू 0.25 आर हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा. फिर उसके बाद दूसरे केस में कहा गया है कि सेल वही लिया गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया गया है, 2 ओम का ले लिया गया है इस केस में. तो इस केस में जो करंट फ्लो हो रही है वो गिवन है 0.5 एम्पियर.
पिछले केस की ही तरह से इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, करंट बराबर नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 0.5 बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस 2 ओम। तो ये लिखा हमने, इक्वेशन बनी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे हमने पहले किया था, स्मॉल आर को 0.5 में और 2 को 0.5 में, तो यहाँ पे बनेगा 0.5 आर प्लस 1 इक्वल्स टू ई हो जाएगा। एलिमिनेट करना है हमें यहाँ स्मॉल आर, क्योंकि हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पूछी गई है, हमसे यहाँ पे ईएमएफ पूछा गया, तो हमें स्मॉल आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। उसके लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 0.5 आर प्लस 2.5 बराबर 2E। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो हम देखते हैं -1.5 बराबर आता है -E, या हम कहें E बराबर 1.5 वोल्ट्स। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। So hope you understand the explanation. Thank you.